Yeah, good morning, everybody. Welcome to the session. I'm late by a minute. Let me set up my other screen. So today the regular monitor is not working properly. Yes, we are there. So good morning, Nanavati ji, and good morning all the participants out there. So are you able to see my screen, everybody? एक बार मुझे आप yes दे दो, so I'll get a confirmation. Hi, Day Trader. Good to see you there. So get into the habit of reading our trading with Stocko on Substack. So we'll start from here. See, as part of building a community of trader is we have our sessions. I've given the link of Substack. Make sure you read it. जब आप read करते हो, you don't miss out the finer points. And then what we do is in this sessions we हम लोग और detailing में जाते. So let's start this session with the disclaimer. और disclaimer है, this is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So let's see 11th March what lies ahead for Nifty, Bank Nifty, OI distribution, global indices, VIX. As I said, सबसे पहले हम VIX देखेंगे. So before that we always track what's happening around the globe. पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है देख डालते हैं. So the headline says, AV good? Yeah, Rajendra ji good? Okay. So the headline is saying that Asia stocks extend gains on lower oil price. Oil price में एक छोटा सा गिरावट आया from the highs. It has cooled off. कल भी मैंने देखा था. So Asian stock mixed है. US futures are up 200 points. कल Dow Jones भी flat था. 34 points is flat for Dow Jones and 14 points for S&P. And even Nasdaq was just 1 point up. So global markets में थोड़ा जो chaos चल रहा था, daily gap down, non-started decline, there is some sanctity being restored. All we can say that. So with that, let's go and check the markets. US futures 200 पॉइंट ऊपर है और मुझे एक बार एशिया चेक करने दीजिए. जस्ट गिव मी अ मिनट. I'll go to indices futures. This is how we plan for the day. Bovespa metals is up 2000 points. देखिए यहाँ पे सब जगह ग्रीन दिख रहा है, बट ग्रीन इज नॉट दैट बिग अ ग्रीन कैंडल सॉर्ट ऑफ अ ग्रीन, बट एक it's a pause in the ongoing decline, and the rally which pullback which started today is showing that market may hold out. After that, see, we follow this process. Okay, इसको आप वॉयलेट मत करो, डायरेक्ट चार्ट्स पे जाके ट्रेड मत डालो. You will not get the desired success. You have to have a 360 degree view on the markets. So as always हम सबसे पहले जाएंगे गिफ्ट निफ्टी पे. ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी just gives us an indication of the open. Beyond that I don't much attention as a short term trader. So गिफ्ट निफ्टी right now अगर अभी हम देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग फ्लैट. So Gift Nifty 53 point, which is 53 points down, it is flat. और गिफ्ट निफ्टी ने कल का हाई नहीं निकाला. See, these are very important observations in a pullback, whether highs or lows are breached. So it's a flattish open. After that, let's go to a market which is Nifty. So we follow this sequence. So are you all getting clarity this way, friends? Let me take a poll from you. Rajendra ji, yesterday couldn't join the yesterday could not join evening 4:30 sessions. Now is it to be joined? Yeah, you can see the recordings on the YouTube channel and on the website. Yes. So now you see, अभी यहाँ पे देखिए ये निफ्टी है. देखिए मार्केट जो रहता है ना उसको हम फ्रैक्टल बोलते हैं. अगर गिरता है तो वन स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता है, जिगजैग होके गिरता है. सो इन बिटवीन यहाँ से यहाँ मार्केट आया, बट बीच में सारे बाउंसेस आ रहे थे आपको.
Similarly, we are seeing one more bounce or a pullback. Let's see how far it extends. And the first rule for a pullback is, अगर हम देखें कहाँ तक जा सकता है, तो it's always the gap. गैप पे हम बोलेंगे एक बार मार्केट रुक सकता है. सो द गैप इज एट 24,375 लेवल्स. आफ्टर दैट फ्रॉम डेली चार्ट, और कल का लो एक सपोर्ट रहेगा. ये जो कैंडल है थोड़ा ग्रीन कैंडल है, एंड इट इज शोइंग दैट मार्केट हैज रीच्ड अ शॉर्ट टर्म सपोर्ट टिल वी डोंट सी एनी मोर geopolitical concerns emerging during the day. So now, after this, friends, अभी हमें कहाँ जाना है? What we have to do? We have seen the daily charts. I'm waiting for you. Yeah, Harpreet, good morning. What we have to do now? अभी कौन से time frame पे जाना है अब मेरे को? I'm waiting for at least somebody to say. Yes, daily trader, I think you would be able to answer this. 15 minutes. Hourly, yes. We go to hourly charts. अभी hourly में भी एक gap दिख रहा है. Everybody is able to clearly see this gap on the hourly. So this is the gap, and this is the first logical resistance for the markets on its way up. और उसके बाद अगर हम देखते हैं, so next is ये high से market decline हुआ था, and यहाँ पे एक basing चल रहा था before the crack. So these two will be my resistance level going forward today on Nifty. अगर support की बात करते तो जैसे ये gap on the downside था, वैसे ये गैप ऑन द अपसाइड है. रिमेंबर, गैप्स आर ऑलवेज फर्स्ट इंस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो ये गैप पे एक सपोर्ट है. कल भी मार्केट नीचे आया एंड इट फिल द गैप. सो दिस इज दिस, एंड देन द एक्सट्रीम जो है जहां से 2 दिन पहले लो बना था, दैट विल टेक. सो अगर मैं नॉर्मल रेंज मार्केट का देखूं तो मुझे अभी इमीडिएट ये लग रहा है टिल इट डजंट ब्रेक ऑन द आइदर साइड, व्हिच इज 24,044 and 24,400. Everybody clear about our plan today? Either give me a yes or a no, तो मैं भी समझूंगा आपको सब clear हो रहा है. Let me read out the questions. Yes. See, आपको चाहिए तो आप नोटपैड में नोट कर लो. See, एक बार चार्ट खोलने से ट्रेड्स नहीं मिलते सर. थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा पर्सपेक्टिव लेना पड़ता है वेरियस टाइम फ्रेम पे, तब जाके यू गेट अ ट्रेड. आफ्टर दिस वी गो टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में व्हाट वी आर फॉलोइंग राइट नाउ इज अ पुल बैक और अ बाउंस. लेट्स से अभी तक तो रिवर्सल का साइन नहीं है. जनरली टेक्स द शेप ऑफ अ चैनल. तो मैं यहाँ से एक चैनल बना दे रहा हूँ. दिस इज द लोअर बाउंड्री, और अगर ये मैं हाई में भी चैनल बनाऊं तो आइदर दिस हाई यू कैन मेक, बिकॉज यहाँ पे वेरियस टच पॉइंट है, और यू कैन टेक दिस हाई, आइदर ऑफ द टू. और एक सेकेंडरी लाइन आप यहाँ पे बना सकते हो पैरेलल, बिकॉज कल का जो ओपनिंग था इट वाज अ ब्लो ऑफ ओपनिंग विच इट कूल्ड ऑफ इमीडिएटली. तो ये मेरा 15 मिनट का सेटअप है. सो राइट नाउ वी आर फॉलोइंग द चैनल ऑन द 15 मिनट्स. एवरीबडी क्लियर? सो दैट्स निफ्टी. पुलबैक कैन एक्सटेंड और इट कैन रिमेन साइडवेज. जो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज हम देख रहे हैं मार्केट का वो ये है. कीप अ नोट ऑफ दैट. देखते हैं विच साइड इट ब्रेक्स एंड देन विल सी नेक्स्ट. So we are done with Nifty. Now let's go to Bank Nifty. Sorry, before going to Bank Nifty, हम VIX always check करते हैं. So VIX India. So this is India VIX. इंडिया विक्स में अगर आप देखो तो एक बार ये हाई पे जाके जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे इतने दिन से, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. हमने बोला इधर ये हाई निकाल के एक ब्रेकआउट आ जाएगा विक्स में, एंड विक्स माइट गो टू 31, or it can cool off and retest 16 levels. Always याद करिए जब भी विक्स में कूल ऑफ आता है मार्केट में पुल बैक आता है. सो स्टिल वी कैन से विक्स इज ट्रेडिंग बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. जब तक 23 विक्स नहीं निकाल रहा, आई थिंक नेक्स्ट लेग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन इज टेकन अ पॉज, हॉल्ट और अ ब्रीदर, और इट मे और मे नॉट बी देयर. आई डोंट नो, बिकॉज सारे इवेंट्स आर लिंक्ड टू जियोपॉलिटिकल situation which is arising. Everybody clear about the VIX part of it? Give me either a yes or a no. I'll wait for you. VIX रोज आपको देखना है. जैसे वॉलेटिलिटी सरफेस होती है मार्केट में, VIX को छोड़ना ही नहीं है. डेली यू हैव टू वॉच द VIX.
अभी ये सो विक्स इज लाइकली टू ट्रेड बिटवीन 23 एंड 18. अगर विक्स 18 तक आता है तो एक अच्छा खासा पुल बैक एक मार्केट में मिलेगा. देखिए अभी मैं ये लेवल्स विक्स के सारे डिलीट कर रहा हूँ. विक्स की पैटर्न आप देखो. इट डिड गिव अ ब्रेकआउट. इट डिड गिव अ 1 day of a cool off. Again, VIX started rising. Again, is it a 1 day cool off or a further cool off? That time will say. Getting my point? अगर विक्स में यहाँ पे मुझे ग्रीन कैंडल दिख रही है, दैट विल बी एन इंडिकेशन ऑफ मार्केट द पुल बैक बीइंग ओवर. अभी ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा. That is the decline in VIX. And those who are joining us for the first time, we do follow VIX because VIX and index is inversely related. And in case of this, abhi uncertainty chal rahi hai and volatility is very high. So the best measure of volatility which has its India VIX. VIX is a measure of volatility. So that was VIX. Everybody clear about Nifty and VIX part? If you give me yes, I'll go next or I'll take up. Sridhar says yes. Good, Sridhar. After that, only we'll go to Bank Nifty. So in Bank Nifty भी अगर आप देखो तो everything is too oversold. See एक चीज आप ध्यान रखो, जब भी मार्केट में एक्सेस होता है either on the upside or on the downside, and the excess to me is market trading throughout the day below the Bollinger Band. इसको हम एक highly oversold बोलते हैं. So oversold हो गया था markets and it is staging a bounce or a pullback. Now what next? Next में ऐसा है ना, अभी बैंक निफ्टी में दोनों साइड गैप बन गए. दिस इज द फॉलिंग गैप. ये जोन जो है ना बैंक निफ्टी का, इस पे आप ध्यान रखो बिकॉज दिस टू मी इज अ वेरी वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस. एक तो ये लो गैप डाउन के पीछे लो तोड़ा मार्केट ने. नंबर टू, जो 200 डे मूविंग एवरेज है जो अभी तक सपोर्ट दे रहा था मार्केट को, नाउ दैट 200 डे मूविंग एवरेज इज अ रेजिस्टेंस और क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इज अराउंड दैट लेवल विच इज 200 डे मूविंग एवरेज प्लस योर गैप. जब दो दो रेजिस्टेंस एक लेवल पे आता है तो वहां पे थोड़ा तकलीफ होता है मार्केट को, विच इज 57,500. एवरीबडी क्लियर? दिस इज द ट्रबल जोन फॉर बैंक निफ्टी विच इज दिस लेवल. मुझे नहीं लगता एक झटके में क्रॉस कर सकता. कर किया तो वेल एंड फाइन, बट एज ऑफ नाउ गिवन द सीक्वेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इट्स टफ. So now over here there are two things. Number one is your 200-day moving average plus we have gap. So जब दो चीज एक साथ मिलती है, this is what we call confluence. कॉन्फ्लुएंस का मतलब है काफी एक डिसाइडिंग और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है. सो एवरीबडी क्लियर अबाउट व्हाट इज अ कॉन्फ्लुएंस? इसको हम कॉन्फ्लुएंस बोलेंगे एंड इट्स ऑन द अपसाइड, सो इट्स अ कॉन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस. गिव मी अ यस एवरीबडी. या आई वांट यस. डन. तो इसको क्रॉस करना मेरे हिसाब से आज के दिन में बहुत टफ है. और अगर आप नीचे में देखें सॉरी फॉर माय थ्रोट, तो कल का एक गैप है, तो ये गैप एक सपोर्ट बन जाएगा. और जब भी एक गैप होता, वो जो ये जो कैंडल है, देयर वाज अ बिग टेल ऑन द डाउन साइड, और जो कैंडल्स की टेल होती है इट सिग्निफाइज बाइंग प्रेशर, शॉर्ट कवरिंग बोलो व्हाटएवर. सो ये आपका ये पूरी टेल को लेके एक सपोर्ट बैंड क्रिएट कर दो. तो जैसे हमने निफ्टी की रेंज निकाली थी फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी की रेंज एकदम खुल के आ रही है सामने. So Bank Nifty is likely to trade in between this till it does not see breakout on the upside. Everybody clear now? So that's how we have detailed both Nifty, Bank Nifty along with the VIX index. Sridhar says yes. Right. Or everybody was still not subscribed to Substack, because there is a process of decision making in which I write a note, you read that note, then we meet in the morning and we fine tune it. और ये आपके साथ रहेगी ना, तो यू कैन रेफर इट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आवर्स, सारे लेवल्स वगैरह एवरीथिंग इनसाइड. हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू सबस्टैक? आई हैव सेंड द लिंक ट्रेडिंग विद स्टॉको ऑन सबस्टैक. अभी हम ओपन इंटरेस्ट देखिए, ओवरसोल्ड से मार्केट 2 बार बाउंस किया, एंड ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखते हैं तो 2 बार 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 2 बार
जो कॉल का ओआई का टावर है विच इज एट 24,300 इज एंड 24,500 और पुट देखते हैं तो 24,200 है. सो दैट्स द लॉजिकल रेजिस्टेंस. एंड बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखने जाए तो yeah, that's how the positions of open interest is. Okay. बैंक निफ्टी में 57,000 पे 1.84 लाख से और 58 पे तो काफी दूर दूर है, मतलब 500-700 पॉइंट आप लेके चलो. प्लस आई डेली डू अ टेक्निकल ब्रीफ ऑन टू स्टॉक्स. तो आज मैंने शोभा इंक्लूड किया है and I have included Mazgon Dog. So how many of you have subscribed right now to Substack? Give me a yes or a no. See, daily I cover Nifty, Bank Nifty. Weekly I cover the global indices. Plus, there are two stocks in which we screen it on technical parameters. Yes, either give me a yes or a no. It's all part of a community building exercise which we are doing, in which all the traders who are part of stock or Incred Money are well informed traders, are literate traders, are not speculators. They have strong logic in place, and then they do get stopped out. So we have a risk management in place. Satadada Roy says, yes, I have. That's great. Nanavati says, yes. Rest, I have put the link out there. If you want, you can go and subscribe. So that's all from my side today, friends. We have done elaborately on Nifty, Bank Nifty, the range has been defined. OI distribution, we have done. Global indices are flattish. At least the strong, relentless decline has stopped, taken a pause, or has halted. Stocks on the move, I have covered the two on the Substack note. Please go through it. A webinar info. Yesterday, we have a very detailed webinar, which was part one on option Greeks. If somebody has missed out, please watch the recording. Conclusion, it is range bound movements in the markets, gaps in Bank Nifty as well as Nifty are likely to offer some very strong resistance going into day's trading. So before I end, I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice and profitable day today. Take a pause, breather, go slow. सोचो समझो फिर करो. So thank you. Good. Yes. Anybody who's based in Mumbai? Because I'm doing an in-person session on coding with GPT plus how to build a Pine script and a trading system. So it's a 3 hours workshop. It's for us. So anybody who's in Bombay can just drop their uh, phone number in the chat window. So the team will coordinate with you. It's in Andheri, so we can all visit there. Yeah, you can put your numbers in the chats. Anybody in Bombay who wants to be part of this session. So we'll be creating trading systems, creating alerts, and coding on it. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody.